Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Tatiksha and आज के वीडियो में I will be sharing with you guys my stationery collection. So originally this was supposed to be a stationery haul, but due to pandemic मैं जहाँ पे रहती हूँ online orders are not allowed and hence I thought क्यों ना मेरा पुराना stationery ही दिखा दिया जाए. I would love to show you all of the stuff that I own, but I do not have a really huge collection, but just a small cute one that I would love to share. And I really hope you enjoy. Before we start, thank you so much for 10,000 subscribers. We are a family of 10,000. Can you believe that? Okay, it's real. Yes. And to thank you guys, I have a giveaway for you. So make sure you stay tuned till the end to know about the rules of the giveaway and what is it that I am giving away. It is a stationery product, of course. You will love it. So yes. Also, if you like this video, make sure you give it a thumbs up, comment down below and subscribe to my channel. So make sure you follow me on my Instagram account for all that masala and behind the scenes. I'm sure you'll love it. So now, without any further ado, let's get into it. Let's get into it. Also, consider me your friend जो तुम्हारे बाजू वाले घर में होती है and you go to her house and she's like, bro, I bought some really cool stationery. Would you like to see? And you're like, yes, I would love to. That's it. I'm your friend, so go get some coffee and enjoy this video. Let's go. Okay, so we will start with my most favorite stationery and that is a diaries. So I have all my diaries here in this organizer. Okay, so the first one I have here is this one. This is not a plain diary. It is an undated journal sort of. It says positive vibes, positive mind, positive life and I love the cover of it. And best part about it is that हर थोड़े पेजेस के बाद इसमें एक मंथली कैलेंडर है अपने हिसाब से जो आप डेट कर सकते हो. And then with every calendar you have different activities. Say for example यहाँ पे एक introduction है. Then अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, so we get anxiety challenge, 21 day anxiety challenge. And then थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो we get a year in pixels. Okay, this is a mood tracker. And ऐसे बहुत सारी cool चीजें हैं with every month. You get codes and as pretty much evident मैंने इसको use नहीं किया है and I do not plan on using it anytime soon. जब ये pandemic खत्म हो जाएगा, only then I will start using it. So yeah, this is the first one. The second one I have is this one. I got this from Miniso. It's pink and golden spiral looks gorgeous. Very minimalistic, has plain ruled pages inside. Gorgeous. उसके बाद we have this one which says every picture tells a story and it has black pages inside. So maybe इसको मैं scrapbook के लिए use करूँगी and I'll put my pictures, memories here. And it came with this really cute bookmark and this was actually a gift to me by my friends on my birthday. And along with this, I was also gifted this one which says I like my money where I can see it hanging in my closet or maybe my stationery box. Yes, इसका बैग भी बहुत cool है and it has white plain pages inside. उसके बाद the next diary I have is this one. Very simple, plain pages है. I just like the cover of it and so I bought it. I also got it from Amazon and I got most of the products from Amazon. So the links of all of that जो भी मुझे Amazon पे मिल पाएगा मैं सबको आपको description box में दे दूंगी. And it also has this bookmark, cover के साथ matching वाला bookmark. So yeah, this is my next one. उसके बाद I have this very simple, very thin diary जो मैंने Beko से ली थी. Beko is similar to Miniso and I got it for 50 rupees. I clearly remember and it has plain pages and इसमें मैंने थोड़े words लिख रखे हैं. I mean ऐसे English के words and then कुछ तो कलाकारी कर रखी है and then it's plain. नहीं, एक और चीज है. Okay, हाँ. So ये 2-3 pages भरा है and then it's plain. The next one I have is this diary. I truly love this one, but इसका elastic अभी खराब हो गया है. But I like the cover and it looks very formal. And इसको मैंने बहुत use किया है. मैंने अपने CA finals के time इसमें मैं planning करती थी. So as you can see, I used to plan my entire day in this spread. So the next few diaries I have are these and these were actually sent to me by Amor Creatives. So she was kind enough to send me these diaries. So I'll show you. सबसे पहले we have this super cute, super minimalistic yet very pastel diary and it has ruled pages inside. The second one is similar to this with a different cover and it is this one. Again super cute, pastel, minimalistic. I have two छोटू diaries. The first one is this one which says gratitude and it has plain pages inside. The quality of these books are very good. इनका cover ना काफी thick है
and I have this one, फ्रेंड्स की डायरी. Surprise! I mean, okay, this is the cutest stationery I have ever owned. Like, so yeah, these were the 4 diaries that were sent to me by Amor Creatives. Thank you, Amor Creatives, and these are very good. Okay, so the next one I have is this one, and this is also my favorite. It says Happy Thoughts, and the best part about is that it has yellow pages. Okay, मतलब येलो पेजेस में इतना कॉमन नहीं है डायरीज, एंड दैट्स व्हाई आई बॉट इट. एंड ये भी मैंने अमेजोन से लिया था. अभी भी इसके अमेजोन का बुक मार्क मेरे पास है. इसका भी लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस इज द वन, एंड ये ना ऐसे पैचेस होता है ना, उसकी तरह ये चिपकाया हुआ है, बट इट विल नॉट कम ऑफ. नहीं, it will not come off. Super good quality. Okay, so the next 2 I have are these 2 छोटू diaries. Sorry, these 2 छोटू diaries, and ये अभी भी पैक्ड है. मैंने इसको ओपन किया है, and it has plain ruled pages, but the cover का quality is super good, and I got this for ₹30 only from a local stationery shop. Yes, and कितने ज़्यादा cute है. Like, you don't have to see कि तुम्हें stationery चाहिए कि नहीं. You actually see कि whether they pass the cute test or not, and they pass the cute test, and I got them. मैं कितनी एक्साइटेड हूँ स्टेशनरी को लेकर. Shit. I mean, wow. Like, look at that smile on my face. I cannot stop smiling when I try stationery. So the next diary is this one. Very simple, कुछ इसमें खास नहीं है except the fact that इसके अंदर अलग अलग कलर के पेजेस हैं, and so I got it. The next one is this very simple diary. I don't know why even I'm showing this to you. इसमें मैं बस जब पढ़ती थी ना, तो मैं अपना टाइम जॉट डाउन करती थी कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ाई की. सो एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि मैंने कितने घंटे इफेक्टिव पढ़ाई की. लाइक 1-1 मिनट का हिसाब होता था इस डायरी में. सो दैट इज व्हाई दिस डायरी इज सो क्लोज टू माय हार्ट. द नेक्स्ट वन आई हैव इज दिस वन. सो दिस इज अ रीराइटेबल डायरी. तो जो व्हाइट बोर्ड वाला कंसेप्ट होता है वो इस डायरी में है, बट द सैड पार्ट इज ये 3-4 साल पुरानी है. एंड जब मैंने यूज किया था ना, मैंने और मेरी सिस्टर ने, सो हमने लिख तो दिया, बट हमने आलस में उसको इरेज नहीं किया, एंड बहुत ज्यादा टाइम निकल गया. सो अभी वो इरेज नहीं होता. बट दिस इज अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने अपने CA IPCC ग्रुप 2 के एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मार्क्स यहाँ लिखे थे, जो अभी इरेज नहीं होते हैं. सो मैं इसको तो नहीं हटा सकती, एंड स्टेशनरी कौन हटाता है, लाइक सब लोग रखते ही हैं. एंड इसमें पीछे टू डू लिस्ट का भी था, बट अभी इट्स ऑल वेरी डर्टी बिकॉज मैंने इसका ठीक से ध्यान नहीं रखा. एंड दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. उसके बाद वी हैव दिस वन विच वॉज अगेन गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड, एंड ये ऐसे रोली पोली होके टाई हो जाती है, एंड plain pages inside, but I really like it. It's very very cool. The next one I have is a to-do notepad, and अगर आपने मेरा stationery haul वाला वीडियो देखा है ना, तो आपको ये already पता होगा. So it says things to do probably later. So it is a complete to-do list, and the best part is that you know इसमें एक stand है, so you can just keep it anywhere you like. You can just keep it here, and tada! Wow! Okay, वो सारी डायरीज थी मेरे पास. So now next move on to sticky notes, and I have quite a few sticky notes. The first one I want to show you is this one. Again, मेरा stationery haul देखा होगा, तो उसमें I mentioned this one. This is my absolute favorite. So it has like all kinds of sticky notes in it, and I can't wait to go to office and you know carry this one in my handbag. उसके बाद I have these page markers, some more page markers. Some more page markers again, page markers and page markers. Yes. So सब same ही है. ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये पेपर मटेरियल है. सो दिस इज मोर यूजफुल व्हेन यू वांट टू राइट सर्टेन स्टफ. दिस इज मोर यूजफुल व्हेन यू ओनली वांट टू मार्क एन इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और समथिंग. एंड दिस वन आई गॉट लाइक 5 years बैक फ्रॉम क्रॉसवर्ड. तब स्टेशनरी का कलेक्शन जस्ट स्टार्ट किया था, ये तब का है. And this one I don't remember, but this is like pretty cool. And yeah, ये तो सब same ही है. So yes, these are all the page markers. Some more page markers. So उसके बाद I have sticky notes, simple वाले. So I have this one, this plain one. इसमें 3NQ लिखा है. I have no clue. उसके बाद I have these color ones. Actually ये वाले comes in a set of 5 color. Amazon पे मिलते हैं and are the best sticky notes out there. And बहुत अफोर्डेबल भी है फॉर द क्वांटिटी वी गेट. सो यस, ये वही वाले हैं. सो यस, आई हैव ऑल दीज. उसके बाद वी हैव दीज फ्लावर शेप के पिंक कलर में, जो मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं बट आर प्रीटी क्यूट.
एंड देन आई हैव अगेन, ये वही वाले हैं Amazon के उसके पार्ट्स में. आई लव दिस लैवेंडर कलर एंड इसमें मेरा आज तक CA फाइनल का कंटेंट लिखा हुआ है जो मैंने पता नहीं क्यों नहीं चिपकाया. इसके बाद आई हैव दिस वन. ये बहुत बच्चा जैसा है बिकॉज ये मैंने बचपन में लिया था मेरे स्कूल टाइम में. सो ये बारबी एंड और बहुत अट्रैक्ट करता था. एंड द गुड पार्ट अबाउट इट इज दैट इसका स्टिक ऑन मैंने अभी निकाला जस्ट टू टेस्ट कि ये वर्थ मतलब चल रहे हैं कि नहीं. सो यस, इसका जो स्टिक ऑन है वो आज तक काफी अच्छा है बिकॉज ये पोस्टेड ब्रांड के हैं. एंड यस, ओ माई गॉड, मैं तब से ऑब्सेस्ड हूँ स्टेशनरी से. उसके बाद आई हैव दिस स्टिकी नोट्स पैड. अगेन ये मैंने 5 साल पहले लिया था एंड तब ये 500 रुपीज का था एंड मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है. सो इट हैज लाइक सो मेनी स्टिकी नोट्स इनसाइड बट आई फाइंड देम थोड़े से इमेच्योर, थोड़े से चाइल्डिश, बट यस यूज करने के लिए काफी अच्छे हैं. इस वाले में ग्लू नहीं है, इट इज जस्ट अ टियर ऑफ नोट पैड. एंड बाकी इनमें वी हैव ग्लूज एंड ग्लूज. इनमें वी हैव ग्लू. यस, कैमरा के सामने अलग-अलग वर्ड्स मेरे मुंह से निकलता है, मेरी इंग्लिश दरी की दरी रह जाती है. उसके बाद भी सम मोर स्टिकी नोट्स एंड देन लास्टली मेरे पास ये वीकली प्लानर है एक्चुअली जो मैंने बैकॉस्ट से लिया था फॉर 50 और 70 रुपीज. एंड मैंने एक क्लिप यूज किया है क्योंकि ये ऐसे ट्योर ऑफ एजेस वाला है तो निकल जाते थे. एंड इसमें मेरे CA फाइनल का 1 वीक मार्च का आज तक प्लान है. सो द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव आवर हाइलाइटर्स. एंड एक्चुअली आई डो नॉट रियली हैव मेनी हाइलाइटर्स बिकॉज मेरे पास बहुत सारे थे बट मेरे पढ़ाई के टाइम सब खत्म होते गए एंड मैं वो सारे फेंकती गई ओनली बिकॉज आई वॉज शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस. अदरवाइज मैं अपने स्टेशनरी एम्प्टीज नहीं फेंकती. सो द फर्स्ट वन आई हैव आर दीज Zebra mild liners and I love these. The best part is that these are super pastel and ये double sided है. So you have the highlighter here on one side and then you have this thinner tip to underline stuff on the other side. So I really like this one and the colors बहुत ज़्यादा pretty हैं. And yes, the second one I have are these Stabilo highlighters. Again pastel. So you know we're usually used to using neon highlighters but once you start using pastel highlighters there's no going back to neon highlighters. I am telling you. Okay, so yes, these Stabilo Boss highlighters, they are absolutely pretty and again ये मेरे Amazon haul में थे. उसके बाद I have these 2 highlighters, coarse smooth liners. Like these work pretty well. These are very affordable and works just fine. But ये neon वाले हैं. And then I have this one which is a Morris highlighter. So it was an expensive one. So I just have one color and I got it from a local stationery shop. But this is a really cool. Like the tip comes off like this. And then इसको यहाँ से press करने से it goes back in. So yes, this is a really cool and again cute. I have this Stabilo neon highlighter जो कि खत्म हो चुका है mostly. Yes, ये खत्म हो चुका है but this was too cute to be thrown away. So yes, मेरे पास ये अभी भी है. Next चलता है pens पे and I have quite a few pens. So these are my favorite Pentel Aerogel का full packet black and blue में. Then I have Octane का packet blue में and then I have just you know random pen pieces यहाँ पे. So चलो देखते हैं. Next I have some flashcards. So I got these flashcards from Amazon. So जब मैं student थी I used to use them a lot मेरे पढ़ाई में and I really like this whole pack because you get quite a lot flashcards for I think 200-250 only and plus you get so many color options. You have red, you have baby pink, sea green जो भी color है ये. So ये सारे color आपको मिल जाते हैं and इतनी quantity के लिए 200-250 is quite a good price because this one packet will last you forever. I just have this one packet and before किधर गया? Yeah. And before I came across this packet, I used to use these business cards. Okay, मैं ये business cards को as flash notes use करती थी but बहुत छोटे रहते हैं so कम कंटेंट के लिए ठीक है otherwise no. Go get this one, link in the description box. उसके बाद
हमारे पास है कुछ wooden clips, colorful cute wooden clips. Then I have some paper clips in this really छोटू सा box. So yes, ये again Amazon के हैं. So I have these paper clips, and then I have this keychain which was again sent to me by Amor Creative. So this is like a super cute keychain, and you can clip it onto your bag or something. So yes, this is a super cute keychain. And apart from that, I also no, I don't have it. Next, I have this totally random डब्बा जिसमें जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ. So We have some pens here. Again, pencil वाला है ये. We have some connector sketch pens here. We have some more pens. We have some glitter pens here. Sketch pens. We have some Camlin bold sketch pens. उसके बहुत सारे parts हैं. Then I have a pen drive here. Some pencil colors, bold sketch pens. Yeah, pretty much that's it. तो ये मतलब मेरा miscellaneous वाला box है जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं यहाँ डाल देती हूँ. okay, so अब इतनी सारी stationery हो गई है. You definitely need some organizers, right? So I'm going to show you some of my favorite organizers. The first one I have is this one, जो आप already देख चुके हो, जिसमें मैंने अपनी सारी notebooks रखी थी. So you can either use it to put it on your notebook छोटी वाली हो या फिर जो ज़्यादा use नहीं आती. Or what I used to do is I used to put all my papers, जो भी लूज पेपर्स होते थे जब मैं नोट्स बनाती थी तो उन सब का स्टैक यहाँ पे होता था. एंड बेस्ट पार्ट इज कि इसका ये अंदर का हार्ड कार्डबोर्ड निकल जाता है एंड ये आराम से ऐसे हो सकता है. सो दिस इज वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. Okay, so the next one I have is this one. So this is actually a cosmetic organizer, but मैं अपनी सारी stationery डालती हूँ. So for example, जैसे ये highlighters हैं. So you can organize all your highlighters here, and these look so pretty. So you can put all your Highlighters here. You can put all your page markers maybe here. All your sticky notes maybe here. And yes, I think it is very functional. बहुत सारे compartments हैं, and this will look like super cool on your desk. So go get this one. Next one is a very simple pen stand, but I really like the look of it. So just wanted to show you. कांच का है, so be very careful. उसके बाद I have this thing which I got from an exhibition. So इसमें एक chain है, and when you open it, you have a notepad attached here, and you have some compartments to keep your sticky notes, pens, some more pages, and it's very spacious. You can also put छोटू वाला diaries inside it. So yes, this is again very functional. मैंने अपना पूरा स्टेशनरी का पिटारा खोल के आपको दिखा दिया है एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वन. लेट मी नो इन द कमेंट्स. So it's time for the giveaway. Very excited. So this giveaway is in collaboration with Amor Creatives, and one of you can win this cute pastel diary which has ruled pages inside. Along with this, you will also get this Chotu gratitude diary which has a plain pages inside, and with this you will get this pen and a keychain. So one of you can win all 4 of this. So the rules to the giveaway are very simple. Number 1, you have to like this video and subscribe to my channel. Number 2, you have to comment down below which of all of these things you love the most. कौन सा था? Baby sticky note, कोई diary, कुछ भी that you love the most. Okay? So you have to Comment down below. You have to like. You have to subscribe. And number 3, you have to follow me on my Instagram page and Amor Creatives. दोनों का link will be in the description box, and that is it. बहुत simple है ना? And you can win all of this. So yes, I really hope you enjoyed this one. If you did, please let me know and stay safe. And thank you for watching this video. Bye.